topic is very unique. It is not related to any technical knowledge, but this is very important topic because right now you are studying, you are going to put your first step at your workplace. तो वर्क प्लेस में क्या जरूरी होता है, दैट इज योर पर्सनल डेवलपमेंट. सो we have two topics which we will be covering. To make it little, we'll try to make it little interactive. Few videos also have included. If you're not able to hear it, or you can just raise it. Otherwise, I'll explain all videos as well. For personality development, there are certain steps which you should take. First is do a SWOT analysis. So what is SWOT analysis? That is, मुझ में अच्छा क्या है, मुझ में वीकनेस क्या है, मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, और मेरी थ्रेट्स क्या है. इसमें कुछ इंटरनल है जिसको मैं खुद सॉल्व कर सकती हूँ, आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो. और ये स्वॉट एनालिसिस प्रोफेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं खुद भी आई वुड से हर साल अपना नेक्स्ट गोल जब बनना होता है, हमारे जो KRA सेट होते हैं, उसमें मैं पहले अपनी स्वॉट एनालिसिस करती हूँ. मेरे में क्या अच्छा है, मेरी में क्या स्ट्रेंथ है, मेरे में वीकनेस कहाँ है जो मुझे पूरे साल भर काम करना है, क्या अपॉर्चुनिटी ले सकती हूँ मैं विद माय स्ट्रेंथ, और बिकॉज ऑफ माय वीकनेस मेरी थ्रेट्स क्या हैं. तो इसमें आपको आई वुड सजेस्ट ईच वन ऑफ यू, दैट विल बी योर होमवर्क. अपना जाओ, अपनी स्वॉट एनालिसिस करो, स्ट्रेंथ देखो. अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी स्ट्रेंथ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, कॉम्पिटेंट हूँ, मुझे सब सिस्टम पता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक मेरी स्ट्रेंथ है. और अगर मैं बोलूं कि मेरी वीकनेस क्या है, उस वीकनेस पे मैंने काफी काम भी किया है. मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, देयर इज एनीथिंग रॉन्ग. बट व्हेन यू आर इन अ प्रोफेशनल लाइफ, बहुत जल्दी रिएक्ट करना इज अ वीकनेस, इज नॉट अ स्ट्रेंथ. तो वो वीकनेस पे काम करो. उसके बाद मेरे को अपॉर्चुनिटी क्या है, विद माय स्ट्रेंथ में क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या कर सकती हूँ, वो अपॉर्चुनिटी लिखो. और थ्रेट क्या है, क्योंकि मेरे पास ये चीज नहीं है तो मुझे ये नहीं मिल सकती, दैट इज माय थ्रेट. तो फॉर ईच वन ऑफ यू दिस इज योर होमवर्क. आप चाहें तो मुझे मेल करिए, नहीं तो आई थिंक यू कैन गेट इट डन, विहाल, and get SWOT analysis from each one of them. मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मुझे किस पे काम करना है. क्योंकि अगर आज आपकी जो स्ट्रेंथ है, कल वो वीकनेस बन सकती है, और जो वीकनेस है वो स्ट्रेंथ बन सकते हैं. सो यू शुड कीप ऑन डूइंग योर SWOT एनालिसिस ऑलवेज. अपॉर्चुनिटी थ्रेट पे भले ही फोकस नहीं करो, बट फोकस इट ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. और वीकनेस को कब अपने स्ट्रेंथ में कर लिया ओवर अ ईयर पता भी नहीं चलेगा. Then there will be something else you will have to work on. So personality development के लिए it is very important to do a SWOT analysis. दूसरा है, because you're just entering a professional life, don't limit yourself. I'll show you a video जिसमें कुछ मक्खियां हैं, फ्लीज हैं, कुछ मच्छर हैं, जिनको एक जार में डाल दिया गया. जब उसे जार में डाल रहे हैं तो वो बाहर उड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको फिर 1-2 दिन के लिए उन्होंने डब्बा बंद कर दिया, तो वो अंदर ही रह गई फ्ली. तो उनकी जो उड़ने का डिस्टेंस है, वो उतने जार की ढक्कन तक रह गया. दे आर नॉट एबल टू कम आउट. 2-3 दिन के बाद जब उन्होंने वो जार का ढक्कन खोला, बट दे वर एबल टू फ्लाई ओनली टिल दैट, बिकॉज उनको आदत हो गई थी कि हम इतना ही उड़ सकते हैं. तो डोंट लिमिट योरसेल्फ. अभी आप बोलोगे कि मेरे को फ्लेबोटमी करना है, नहीं मुझे तो टेक्निकल जाना है, और टेक्निकल कर लिया तो बस आई एम सेटिस्फाइड. नो, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. इतनी अपनी पर्सनालिटी ऐसे डेवलप करनी है कि दिस इज नॉट द लिमिट. द लाइफ इज लिमिटलेस, द वर्क इज लिमिटलेस. तो एक आप ये देखिए वीडियो. Training fleas requires a glass jar with a lid. The fleas are placed inside the jar and the lid is then sealed. अभी आप देख सकते हैं कुछ बाहर निकल रही हैं.
They are left undisturbed for 3 days. Then, when the jar is opened, the fleas will not jump out. In fact, the fleas will never jump higher than the level set by the lid. Their behavior is now set for the rest of their lives. अगर लिमिट कर लोगे तो जहां हो रेस्ट ऑफ द लाइफ वहीं रह जाओगे. When these fleas reproduce, their offspring will automatically follow their example. आपकी नेक्स्ट जो भी लोग होंगे आपके साथ वो भी ये फॉलो करेंगे. सो प्लीज डोंट लिमिट योरसेल्फ. फर्स्ट इज डू स्वॉट एनालिसिस. अपने दिमाग में ये बना लो, वी आर नॉट गोइंग टू लिमिट स्काई एंड अबव द स्काई इज आवर लिमिट. थर्ड इज बिलीव इन योरसेल्फ. Nothing is impossible. You have to say, I am possible. It is possible. This is a short animated video of Chandrayaan. कैसे इंडिया ने चंद्रयान 1 से चंद्रयान 3 किया. चंद्रयान 1 फेल हुआ, 2 फेल हुआ, बट 3 अगर हमारे इसरो के जो साइंटिस्ट थे रुक जाते चंद्रयान 2 पे, तो आज हमें जो वॉट एवर वी हैव अचीव्ड कभी अचीव नहीं होता. They knew that they can do it. They failed, but finally they succeeded. So just see this. Okay. So अगर इसरो के साइंटिस्ट ने बिलीव नहीं किया होता, इंडिया के लोगों ने बिलीव नहीं किया होता, तो दिस वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल. सो बिलीव इन योरसेल्फ. काम स्टार्ट करोगे, छोटा काम मिलेगा, पर उसको छोटा नहीं समझना. जो भी काम मिलेगा इट इज ऑलवेज बिग. वो एक सैंपल कलेक्शन एरिया हो सकता है. फॉर मी आई वुड से, मैं बहुत बार बोलती हूँ कि सैंपल कलेक्शन में सबसे अच्छे लोग होने चाहिए, बट हमारे जो टेक्निकल डिपार्टमेंट या डीएमएलटी स्टाफ होता है वो सोचता है नहीं, मुझे तो मशीन चलानी है, इंस्ट्रूमेंट चलाने हैं. बट आई वुड से बेस्ट पीपल शुड बी ऑन इन द एरिया ऑफ लेबोरेटरी, नॉट ऑन द टेक्निकल साइड. टेक्निकल पहले होता था जब सब कुछ मैनुअल टेस्ट होते थे. अभी तो एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड. जो पेशेंट से इंटरेक्शन है फ्लेबोटमिस्ट की है. सैंपल लेना है, रिपोर्ट देनी है, इट इज ऑलवेज द फ्रंट ऑफिस पीपल, फ्रंट डेस्क पीपल, फ्लेबोटमिस्ट जो कांटेक्ट में आता है पेशेंट के. सो बिलीव इन योरसेल्फ. सो फर्स्ट पॉइंट वाज स्वॉट एनालिसिस. मैं थोड़ा रिपीट करती रहूंगी जिससे आप लोगों को, बिकॉज आई नो यू आर ऑन अ फोन एंड ऑल. दूसरा, डोंट लिमिट योरसेल्फ. लिमिट कर दोगे तो मुश्किल होगी. देन नथिंग इज इम्पॉसिबल. यू हैव टू से दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, आई एम पॉसिबल. ओके. नेक्स्ट है नो वर्क इज स्मॉल. एक छोटा सा यूट्यूब वीडियो है, गिरीश कर्नाड का है, आई थिंक आप लोगों ने देखा भी होगा, जिसमें एक लड़का है, वो बोल रहा है अपने पेरेंट्स को कि मुझे कुंफू सीखना है. तो उसको वो मॉन्क के पास लेके जाते हैं कुंफू सिखाने के लिए. पर मॉन्क उससे कुछ काम ऐसा करवाता है जो उसे लगता है कि मैं तो आई हैड कम टू लर्न कुंफू और ये मुझसे क्या करवा रहा है. बट अल्टीमेटली जो वो काम को छोटा समझ रहा होता है उसको इतना अच्छा बना देता है कि when he returns back home तो क्या होता है, just see that. Yes. Let me tell you a story. तो ये लड़का है जो अपने पेरेंट्स को कह रहा है मुझे कुंफू सीखना है, और उसके फादर उसको कुंफू सिखाने के लिए मॉन्क के पास लेके जा रहे हैं. So one day they set off. His father took him to the most revered martial arts master of the time, who was a monk in a nearby monastery.
The monk accepted Lobsang as his disciple. As soon as the father took his leave, the monk initiated the boy into the discipline and asked him to fetch a bucket of water. When the boy put the bucket in front of the monk, he was instructed to slap all the water out of it. As soon as he had finished, the monk asked him to bring another bucket of water. And the boy, who had been brought up to respect his elders, did so without question. He slapped all the water out of it when he was asked to bring another bucket of water and repeat the entire process. This went on day after day, week after week, month after month, without a break for more than a year. Finally, the boy had had enough. So he asked his teacher's permission to go home for a few days. The monk agreed, and the boy set off on his journey home. News reached the village that he was coming back. People waited expectantly for the young hero's return. They wanted to see for themselves what he had learnt in a year. But Lobsang was most apprehensive. He was convinced he had learnt nothing. When he finally reached his village, he rushed to his parents' home. But his friends followed him, crowding around him. All of them gathered around him at the big family dining table and continued to pester him. Show us Kung Fu. Show us Kung Fu. Unable to bear the shame of it any longer, young Lobsang got up and cried out in frustration, I know no Kung Fu. Our young disciple was shocked. Unknown to him, he had become strong. Yes. तो कुंफू सीखने वो गया था, लेकिन वो उससे पानी निकलवाता था. And he thought कि उसने कुछ नहीं सीखा, but actually he learned. उसके हाथ इतने hard हो गए कि he learned. So no work is small. You will start with a small activity or a small department. But as I told you, don't limit yourself. If you don't limit, you'll reach sky. But if you'll say कि ये छोटा काम है, ये तो मैं नहीं कर सकता, that will imbibe in your personality
and there will be no personality development. Okay. So our first topic on personality development, we have 4 messages. First is do SWOT analysis. Don't limit yourself. Your limit is sky, beyond sky. Believe in yourself, and no work is small. Don't consider any work small. अगर वो रजिस्टर भी इधर से इधर करना है या कोई रजिस्टर फिल, आई नो जब आप फर्स्ट जॉब जाते हो या फर्स्ट प्लेस में जाते हो, दे ट्राई not giving you anything. They'll say कि ये format भरो. They'll say कि register भरो. You learn from that. Start doing that. Once you will do that, you will learn other things as well. I'm not sure how workplace ready you people are. And because of that only this topic has been kept. So I would say we must know what is the ABC of a workplace readiness. That is, you need to be available all the time. And this is not only for you, I would say it is for me as well. For everyone who comes at a workplace, ABC is for each one of us. A is the availability, B is the behavior. Many times when we reach at certain position, we start behaving badly to the people below us. No. Behavior should be unbiased, professional behavior should be there. Then C is the competency and checklist. I would say checklist is very important. If you see, I have a diary. I have a 26 years experience that already he has told. But if you will see, yesterday I had jotted down certain things, what all I have to do. So each one of us should make a checklist. These things I have to do. So ABC is A, always be available and approachable for everyone. Behavior should be at its best, unbiased and natural. Competency, learn as much as possible. This is the age where you need to learn, keep upgrading your competency. There are certain core competencies which you need to develop during your workplace. Have a checklist. So these A, B, C will be very helpful when you come out from your colleges and enter a workplace. I'll just elaborate a small case study of a hospital where it shows that how a checklist is important. यहाँ पर एक hospital है जिसमें all of us know कि ICU में lot of catheter patients are there. लेकिन उन catheter patients से infection होती है और कई बार because of that infection and septicemia death भी हो जाती है. So in one of the hospital in 2006, 80,000 ICU patient को catheter डाला, जिनको infection हुआ और उनमें से 28,000 की death हो गई. So which is quite a big number. When it reached the MS or a medical superintendent, he said कि हमें कुछ करना पड़ेगा कि इतने infection क्यों होते हैं और infection के बाद deaths क्यों होती है. So they made a simple checklist. Wash your hands with soap, clean the patient's skin with antiseptic, put sterile drapes over the entire patient, wear a sterile mask, hat, gown, gloves like PPE, and put a sterile dressing over the catheter site. He asked the nurses of the ICU to monitor if doctors are following this checklist or not. What they found, the doctor skipped some of the points in the checklist while treating 33% of patients. He persuaded the hospital management to let nurses stop the doctors if they did not adhere to the list. So checklist is very important for all of us. Checklist is a small part of a SOP. SOP तो बड़ा होता है, वो आप पढ़ नहीं सकते हो, लेकिन चेकलिस्ट में SOP के मेजर पॉइंट्स लिखे होते हैं, वो चेकलिस्ट हमेशा होनी चाहिए आपके पास में. So when they followed all the steps in the checklist, the line infection declined from 11% to 0%. So if you follow a checklist, it will help you all take action, avoid time wastage कि एक के बाद कौन सा step करना है, दूसरा step कौन सा, third कौन सा. So that checklist will have everything. So you all should have a checklist with you. Checklist is very important at a workplace, right?
then is work pressure. काम पे आओगे तो प्रेशर होगा. काम पे आपको इसीलिए रखा है क्योंकि काम है, और काम है तो वर्क प्रेशर भी है. So how and why is it important? Like वर्क प्रेशर की एक है स्टोरी, आई डोंट नो यू विल बी एबल टू. ये थोड़ी सी वैसे ही बता देती हूँ कि एक हॉर्स था, एक घुड़सवार था, हॉर्स राइडर था विद दी हॉर्स. तो उसको कहीं भी जाना होता था वो उस हॉर्स पे जाता था. अब एक दिन वो कहीं जा रहा था तो एक बहुत बड़ा गड्ढा था और हॉर्स अलोंग विद हॉर्स राइडर उस गड्ढे में गिर गया. अब हॉर्स राइडर तो he climbed the complete mud and came out, but horse नहीं आ रहा था. And horse rider को वो horse बहुत अच्छा लगता था because he used to help him reach anywhere he wanted to go. So he tried कि horse को खींचने की, पर वो जितना horse को ऊपर खींचता था horse उतना ही नीचे जा रहा था. He wasted around 6-7 hours pulling him. वो भी थक गया horse rider. Then he said कि इसको मैं इस गड्ढे में डाल ही देता हूँ, इसके ऊपर मिट्टी डाल देता हूँ, ये इसको यहीं पे मरने छोड़ देता हूँ. सो व्हाट ही डिड, उसने मिट्टी उठाई और हॉर्स के ऊपर डालने शुरू करा. तो हॉर्स की जैसे ही आंख पे मिट्टी जाती, ही ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग. तो हॉर्स राइडर सेड कि यहाँ मैं इस पे मिट्टी डाल रहा हूँ कि ये नीचे जाए और ऊपर आ रहा है. तो उसने और तेजी से मिट्टी डालनी स्टार्ट की. जितना तेजी से मिट्टी का प्रेशर आया उतने तेजी से दैट हॉर्स क्लाइंब्ड द डग एंड ही केम आउट. अब जैसे बाहर आया हॉर्स राइडर सैट ऑन हिम एंड दे वेंट ऑफ. सो इट इंप्लाइज वर्क प्रेशर होगा बट दैट इज फॉर योर ओन ग्रोथ. आपको ग्रो कराएगा वो. सो डोंट फील कि वर्क प्रेशर है, because when you will come for work, there will be pressure at home, there will be pressure on the roads, there will be pressure at the work. All this pressure will help you develop further. If you will not be able to take this work pressure, then it will be putting all of you in that dug. उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाएगी, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपको खुद वर्क प्रेशर हैंडल करना सीखना हो. So when you come for a work, you should have a checklist. You should know there will be a work pressure. That is why you have been appointed. You have been appointed as an employee of that company. Okay, so you need to know how to handle a work pressure. Then ये ईगल मेंटालिटी एंड ईगल की स्टोरी मैं बहुत बार बताती हूँ. It's my hobby to keep reading these motivational stories, and during my talk also I keep telling them. So I would like all of you to see this eagle mentality, and इसमें से जितने आप ले सकते हो, आपको सारी, there are about 7 qualities of eagle. So उन qualities में आप जितने भी ले सकते हो, it will be good for you at your workplace. So let's watch this eagle mentality video. Don't be a parrot in life. A parrot talks way too much, but can't fly high. But an eagle is silent and has the willpower to touch the sky. Here's the 7 mentalities that we can learn from an eagle. Number 1, eagles fly alone at high altitude. Eagles don't fly with sparrows, ravens, and other small birds, meaning stay away from narrow-minded people, those that bring you down. Eagles fly with eagles. There's a saying that goes like this: people you hang around will eventually determine the person you become. Keep good company. Number 2, eagles have vision. They have the ability to focus on something as far as 5 kilometers away. No matter what the obstacles, the eagle will not move his focus from the prey until he grabs it. Meaning, have a vision and remain focused in your life. No matter what the obstacles and challenges you may face, don't give up and you will succeed.
Number 3, eagles are fearless. An eagle will never surrender to the size or strength of its prey. It will always give a fight to win its prey or regain its territory, meaning no matter what the size or big your problems are, don't give up. Instead, face it. Successful people are fearless. They face problems head on. Number 4, eagles are tenacious. Eagles love storm. When clouds gather, the eagles get excited. The eagles use the storm wind to lift themselves higher. Once it finds the wind of the storm, the eagles use the raging storm to lift itself above the clouds. This gives the eagle the opportunity to glide and rest its wings. In the meantime, all the other birds hide in the branches and leaves of the tree, meaning achievers are not afraid of challenges. Rather, they relish in them and use them for profitability. Number 5, eagles never eat dead things. Eagles never eat dead meat. In other words, an eagle does not scavenge. It only eats the meat from the prey it kills itself. Meaning, do not rely on your past success. Keep looking for new frontiers to conquer. Leave your past where it belongs, in the past. Number 6, eagles prepare for training. They remove the feather and the soft grass in the nest so that the young ones get uncomfortable in preparation for flying. And eventually, they fly when it becomes too unbearable to stay in the nest. Meaning, leave your comfort zone. There is no growth there. Last but not least, number 7, eagles possess vitality. When the eagle grows old, his feathers become weak and cannot take him as fast and as high as it should. This makes him weak and could make him die, so he retires to a place far away in the mountains. And while there, he plucks out the weak feathers in his body and breaks his beak and his claws against the rocks until he is completely bare. A very bloody and painful process. Then he stays in his hiding place until he has grown new feathers, new beaks and claws, and then comes out flying higher than ever before. Meaning, we occasionally need to shed off old habits, no matter how difficult. Things that burden us or add no value to our lives should be let go of. Thanks for watching this video. Share and subscribe for more amazing inspiration. Okay. So major qualities which eagle has and all of us as a professional should have is surround yourself by good and positive mindset. तभी आप ऊपर, जैसे हमें दिखाया था, ईगल के आसपास कोई बर्ड नहीं होता, वो सबसे ऊपर उड़ता है. और ऊपर उड़ने का मीनिंग ये नहीं है कि आप बहुत हाई ऊपर हो जाओ, मीनिंग कि नेगेटिव और या जो आपको नीचे पुल करते हैं उनको छोड़ दो एंड फॉलो द गुड एंड पॉजिटिव माइंडसेट. अनटिल एंड अनलेस यू हैव दिस, आप किसी भी वर्क प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते. इफ यू हैव नेगेटिव थॉट्स कि मुझे अच्छा काम नहीं मिला हुआ, उसे मिला हुआ है, और यू से कि जो मुझे मिला वो बेकार है, और any other person saying कि तू जहां जॉब कर रहा है that company is not right. So avoid all those negative mindset, negative thoughts which are coming around your surroundings. Sharp and long vision. आपका काम सिर्फ टेक्निकल तक नहीं है. You have done MLT, DMLT, you have done, but what is your long vision? You should have sharp and long vision. When I joined Lal Pathlabs, मैं एक पैथोलॉजिस्ट हूँ, तो मैंने एक पैथोलॉजिस्ट की तरह ज्वाइन किया था दिल्ली के एक लैब में. और अगर मेरा लॉन्ग विजन नहीं होता, मेरा शार्प लॉन्ग विजन नहीं होता,
तो आज मैं एक पैथोलॉजिस्ट से सीनियर पैथोलॉजिस्ट हो जाती, बट आई हैड अ लॉन्ग विजन. लेकिन उसके लिए मैंने I surrounded myself with good vibes, positive thinking. Okay, so this sharp and long vision is very important. No carryover bag of past experience कि मेरे साथ तब बुरा हुआ था अब भी बुरा होगा. No, handle storm carefully. What I told you, work pressure, leave your comfort zone. आपने देखा कि जो ईगल होता है वो क्या करता है, अपने जहां पे उसने नेस्ट बनाया होता है उसमें उसके जब एग्स बाहर आ जाते हैं, छोटे छोटे बेबीज होते हैं, उनकी वो अंदर से सारी ग्रास ऑल कंफर्टेबल एरिया हटा देता है, सो दैट दोज स्मॉल जो सिपलिंग्स हैं वो उड़ना शुरू हो जाए. दे लीव दैट कंफर्ट जोन. अगर उसको आप अनकंफर्टेबल कर दोगे तो दैट विल लीव दैट अनकंफर्टेबल जोन एंड स्टार्ट फ्लाइंग. So you have to leave your comfortable zone. The job is available at one side, but you're living at the other side. We don't want to go to that area because we want a comfortable area here. No, you'll have to leave it to grow like a fly, like an eagle. Honesty and integrity is key across all over workplace. Accept and prepare for the changes. Lot of technology is changing. Whatever you have learned today will not be available tomorrow. So during your work experience, you'll have to learn. आपने अभी AI सब नहीं ज्यादा पढ़ा आपने उसमें, but everything will be artificial intelligence based. Everything will be machine learning. So from there, how you grow to artificial intelligence is what you have to prepare yourself. So that's all from my side, considering both the characteristics of your personal development as well as workplace readiness. Take away home messages. That's the SWOT analysis each one of you should do. Don't limit yourself. Believe in yourself. You learn from all the work assigned which has been given. ABC is your availability, behavior, and competency as well as a checklist. Pressure at work will be there, but that is to make you perfect. And be like an eagle across your life. You will definitely succeed. And I think one day all of us will meet as well. And today we are on Teams, but maybe next time we can always meet. So that's my email address. If you want to write down, you have any query, concern, you come through, not directly to me, but come through Vishal only. Right, and that's all. Thank you so much, ma'am, for Thank your you. kind and Thank you all. participation. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am.